Hello students, I am Chinmay sir and we will learn the Python program in this channel. The name of the channel is PyPro. आज हम सबसे बेसिक से ही हम सीखेंगे कि कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर क्या है, तो पाइथन क्या है, उसको प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, शुरू से सीखेंगे, राइट? सो व्हाट इज ए प्रोग्राम? A computer program is a collection of instructions. कंप्यूटर प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का ही कलेक्शन होता है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए होता है, नॉट ऑल द टास्क. लाइक कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क बट अ प्रोग्राम कैन डू स्पेसिफिक टास्क. ओके, व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, राइट? सो व्हाट इज पाइथन? So Python, sometimes you are saying, so it is a reptile. But you see, however, Python is also a programming language. And who has created? It is created by Gordon Rosen when he was working at Centrum, which is at Informatica. Okay, so in 1970s, he has developed the programming language. Okay, so why Python for AI? Because it is very easy and it is techno friendly. So it is used for the artificial intelligence. Let's see applications of the Python. Python हम कहाँ यूज कर सकते हैं और Python प्रोग्रामिंग करके हम क्या क्या आगे कर सकते हैं. Let's see the web and internet development. तो हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं. डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन सब कर सकते हैं. डेस्कटॉप में जो भी एप्लीकेशन होता है तो वो भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं. डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स. देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर भी हम बना सकते हैं. देन आप जैसे गेम खेलते हैं, 3D ग्राफिक्स देखते हैं, सो ऑल दीज ऑल्सो कैन बी डेवलप्ड. डेटाबेस जैसे आप लोग यूज करते हैं, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, साइबेस एटसेट्रा, DB2, FoxPro, सेम टाइप ऑफ डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं. नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन. पाइथन हम स्टार्ट कैसे करेंगे? दैट कैन बी स्टार्ट, मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग द विंडोज PC or Windows laptop. In that it is very easy. Okay, so you can download it. For example, your Windows is Windows 64-bit operating system, so you can download it. So where you have to download? From python.org, and all the downloads you can get python.org/downloads. In that, so you have to select the link, the installer. After the installer, what you have to get? The install process is going on, and you will get optional features also here. In this optional features, you have to put tick for all these and click on the next. And for the version is 3.7.3 we are using for here, and advanced options are here. So tick all these, install for all users, and requires the PyLauncher. Then create shortcut, add Python to environment variables, add precompiled standard variables. Then you can browse to change it. When you need the installation process, you can select in this PC and which drive you need and which folder you need, or you can create your own folder for that also. After creating the folder, then select the folder. Otherwise, Python will create its own folder with the version like Python 3.7. So it will create the Python 37, Python 3.7, Python 37 नाम पे folder create हो जाता है. Then now you can say it is okay. Then in advanced option, all these things you have selected and click on install. Now setup process is going on. After the setup process, so you will get the Python. In Python, the two modes are there. Python IDLE, which we are working on it. IDLE means integrated development, L for development, and E for environment. And some of us were saying IDLE means
integrated, I for integrated, D for development, L for learning, E for environment. Integrated development for learning environment. In this, इसका मतलब ये है कि in this platform we can write the program as well as we can execute the program also. हमें प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए किसी दूसरा प्रोग्राम में जाना नहीं पड़ेगा. Python itself can execute the program. So there are two type of mode. This is called the Python shell, or you can say it is the interactive mode, and another one that is called the script mode. Script mode, how you will get the script mode? In Python shell, go to the file and click on the new file. So you will get the script mode. In the script mode, what are the text you are writing, what are the program you are writing, you can save it for the further use. But what we are using in the interactive mode or shell scripting, हम क्या करेंगे सेल स्क्रिप्टिंग में? इसमें जस्ट हम प्रोग्राम को लिखेंगे, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखेंगे. छोटा प्रोग्राम भी हम लूप भी लिख सकते हैं, बट नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम. अरे ये किस पर्पस के लिए होता है? ये टेस्ट पर्पस के लिए होता है. ठीक है, जैसे अभी मैं पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूं. Ideally Python 3.9, it is installed in my laptop. Now it is open. So in this you can start your writing. Okay, start writing the program. Suppose you have to write, suppose add two numbers, 10 plus 5. Now we are getting the 15. Very easy. Mathematical operator already we know. Suppose we want to multiply 10 into 5. Now we are getting 50. Suppose 10 minus 5, that is 5. 10 divided by 5, now we are getting 2.0. Always the fraction is showing integer fraction in the float. So let's see in different things in different way. So as I have told, script mode is okay. Suppose we would like to go into the shell mode and we are going for the script mode. Script mode will write all these things. Before that, I'll show you how this program is working. So multiplication and addition, all this at a time it can work. Okay, so the rule is there. First multiply. Okay, 10 into 14 plus 2. Now the result is 42. Now suppose we would like to print something or display something. For the display purpose, we need to write the keyword print. After the print, one function will be there, or one method is there. So in that method, we are writing the hello learner. हम hello learner लिख रहे हैं और डबल कोट में. डबल कोट मतलब ये कंस्टेंट है, एज इट इज यही डिस्प्ले करेगा. ठीक है, अब प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं. हम लोग लिखना चाहते हैं तो print bracket close, within that double quote we are writing hello students. Now hello student is showing because hello student it is constant. Okay, variable कैसा है? print. सपोज मैंने लिखना चाहता हूं विद इन डबल कोट या फिर सिंगल कोट में हम अगर लिखेंगे तो कंस्टेंट योर रिजल्ट, कॉमा के साथ मैं लिख सकता हूं 10 into 5. 10 into 5 कंस्टेंट नहीं है, नंबर है, ये ऑपरेशन होगा. Now we are getting your result 50. 10 into 5 50 हो गया. ये your result जो है कंस्टेंट था, तो कंस्टेंट ऐसे एज इट इज डिस्प्ले कर रहा है. 10 into 5
सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर नहीं है, तो ये वेरिएबल है। तो ये ऑपरेशन होने के बाद डेटा का रिजल्ट आएगा। सपोज मैंने ऐसे लिखूंगा, सेम थिंग मैंने एंटर दिया, सेम लाइन में जाके सेम थिंग मेरा सेम लाइन ऑफ कोड मेरे पास आ जाएगा। 10 इंटू 5 को भी मैंने इसको डबल कोट में रखूंगा। ये रिजल्ट 10 इंटू 5, ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये भी एक कांस्टेंट है, इसलिए नहीं हुआ। और एक चीज है, सेम लाइन को ऊपर मैंने कर्सर रख के क्लिक कर दिया तो वो लाइन मेरे पास आ गया। ईयर रिजल्ट के बाद मैं चाहता हूं इसको, मैंने बोला था आइदर आप सिंगल कोट या फिर डबल कोट में रख सकते हैं। लेट्स ट्राई। यस, इट इज वर्किंग। बट अगर हम इसको चाहते हैं कि योर रिजल्ट जो है सिंगल कोट में रखेंगे, इसको कंस्टेंट बना के रखेंगे, एज आई हैव टोल्ड कि हम इसको सिंगल कोट में रख सकते हैं या फिर डबल कोट में रख सकते हैं कंस्टेंट के लिए। नाउ योर रिजल्ट इज 50, single quote mate is working. Once again, I would like to just modify it. 10 into 6. Now in between also, you can press the enter. There is no need to go to the end of the line. मैंने लाइन का एंड में नहीं गया। सपोज मैं ये वाला लाइन को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया और मैंने एंटर किया। नाउ आई कैन मॉडिफाई इट। तो मैं मॉडिफाई भी इसको कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं मॉडिफाई करना नहीं चाहता हूं, मैं इसका बीच में कहीं भी रख रहा हूं कर्सर एंड आई एम प्रेसिंग एंटर, बट स्टिल आई एम गेटिंग द आंसर। इट इज कॉल्ड द इंटरैक्टिव मोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर दिस टाइम।